Hello friends, today we are going to study difference of electrostatic potential and electrostatic potential at a point. Electrostatic potential difference and electrostatic potential. In the last class, we got the formula for electrostatic potential difference. Now we will study electrostatic potential in this class. So what is the difference between electrostatic potential difference and electrostatic potential? इन दोनों में अंतर क्या है? So electrostatic potential difference, this term electrostatic potential difference is defined between 2 points. And your electrostatic potential is defined at a single point. So electrostatic potential is defined at a single point and electrostatic potential difference is defined between 2 points. In the last class, we had studied that what is electrostatic potential difference. For electrostatic potential difference, that is electrostatic potential difference between points Pi, initial point, whose position vector is Ri, and point Pf, whose position vector is Rf, is your 1 by 4 pi epsilon naught q 1 by Rf minus 1 by Ri. This is your electrostatic potential difference between 2 points Rf and Ri. For that, we had studied the diagram. Charge q plus situated here, x and y, and this is any point Pi, and this is your Pf. This is your position vector Ri, and this is your position vector Ri, and this is your position vector Rf. For this we had studied. So what is electrostatic potential? The difference between these two is that here potential difference is defined between 2 points Pi and Pf. Pi may be any point or Pf may be any point. But if your final point this Pf is your any point and initial point becomes infinity, then it becomes electrostatic potential at point Pf. It means that, see here, for example, your electrostatic potential difference diagram is like this.
one is Pi and this is Pf, this is Ri and this is Rf. An electrostatic potential is that initially at a point P whose position vector is your R, means this is its position vector R, and at this point electrostatic potential will be what? When the other point is at infinity, means your initial position is your infinity. Initial position is your infinity and final position is your point P. So this is your this is like your Pi and this is like your Pf. As in this case, if you compare this, so if this is Pf, so this is Pf here and here is Pi, so here is Pi. So if any if work done is calculated in bringing unit positive test charge from infinity to a point, means your initial position, this position, if becomes infinity, and your final position, this final position becomes your a point, then this electric potential difference is called electric potential at point P. Here it is point P whose position vector is your R. So डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दो पॉइंट होता है, एक इनिशियल और एक फाइनल, जिसको हमने पढ़ा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन को हम लोग इन्फिनिटी पे ले लेते हैं। तो इस केस में यदि इनिशियल पोजीशन जो यहाँ है इसको यदि हमने इन्फिनिटी मान लिया और फाइनल पोजीशन जो है उसे हमने किसी पॉइंट को मान लिया जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है वह वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह वर्क डन क्या होता है, वह होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो इसे हम लोग कैसे दिखाते हैं, Vp, इसे हम लोग कैसे दिखाते हैं, VPIPF ऐसे दिखाते हैं, और इसे हम लोग Vp से दिखाते हैं। तो हमने देखा था कि जो पहले मैंने बताया था VPIPF इज इक्वल टू क्या होता है, VPF माइनस VPI, और वह इक्वल होता है वर्क डन फ्रॉम PI टू PF, और यह इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/RF माइनस 1/RI। हाँ, इसमें इनिशियल जो है वह इनिशियल पॉइंट Pi को हमें क्या मान लेना है, इन्फिनिटी। If we consider initial point Pi as infinity and Pf, your Pf final point, any point P whose position vector is R, then if we put this data in this formula, what will we get? See here, then we will get like this, Pf, it will be V from infinity to a point P is equal to Vp minus V infinity, and this will be work done from infinity to point P. Likewise for this PIPF, Pi in the place of Pi we have taken infinity, in the place of Pf we have taken point P. Here VPF and minus VPI, so VPF final is your point P
and is initial Vpi is your V infinity. Again WPIPF. So initial is your infinity and final is your point P, and so it will be equal to what? 1 by 4 pi epsilon naught charge Q into RF. What is your final? Final is your P. So it will be 1 by R, because the position vector of point P is your R, minus 1 by Ri. Initial position is your infinity, so its position vector will be 1 by infinity, and therefore it will become 1 by 4 pi epsilon naught Q. 1 by infinity is 0, so 1 by R. So this is electrostatic potential at a point is your, and is called electrostatic potential at a point. So electrostatic potential at a point P is actually equal to V infinity P, and is equal to this, and is equal to this, and this, and this. So this is called electrostatic potential at a point. Electrostatic potential at a point. So here we have seen, हमने क्या देखा कि यदि इन्फिनिटी के इनिशियल पोजीशन के जगह हम इन्फिनिटी को ले लेते हैं और फाइनल पोजीशन के जगह किसी पॉइंट जिसका पोजीशन आर है वो हम लोग ले लेते हैं, तो ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट देता है. कैसे? तो हमने ये पिछले बार पढ़ा था. VPI/PF जो इनिशियल पोजीशन है और PF फाइनल पोजीशन है, तो वो इक्वल टू ये होता है और इतना बराबर ये होता है. ये हमने पढ़ा था. इसमें हमें करना क्या है? इनिशियल पोजीशन की जगह पे इन्फिनिटी ले लेना है ना. इन्फिनिटी ले लेना है. क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ये है इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी और फाइनल पॉइंट हो गया P, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P बोलेंगे, है ना. तो अब क्या हो गया? इसके लिए जो फॉर्मूला है वह इन्फिनिटी P और इन्फिनिटी का वैल्यू हमने रख दिया, तो इस तरह से Vp हो गया. तो हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट जो Vp है वह एक्चुअली में ये है और इसका फॉर्मूला ये है 1 by 4 pi epsilon naught Q by R है. R क्या है? R क्या है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर of point P. So this is your electrostatic potential at a point and electrostatic potential difference. Thank you very much.